Okay, musician and dressmakers. So it has giving a lot of examples wherein you will get to Example know, of what? the one who will get suffer from this RSI disease. I mean to say. Is it only saying that? Or is it a little bit something more than that? See, if you look at this paragraph, it says more than 500,000 Britons suffer from RSI or work-related upper limb disorder, the description specialists prefer to use. So what is the name? The name of this disorder is RSI, या तो फिर इसको बोलते हैं work-related upper limb disorder. ठीक है? Then you have this however. Now, however is a contrasting linker. However, but, although, even though, all of these are contrasting. So जो भी आप however के पहले पढ़ रहे हो और जो भी आप however के बाद पढ़ रहे हो, those have to be contrasting. You know, they are contrasting. So this figure includes only reported cases. ठीक है? Students and children are not included. Nor are the thousands of stoics who struggle in silence. Many who call our helpline are desperate. They say they cannot afford to lose their job. So the whole idea that we are getting from the first paragraph is कि पहले तो वो बोलते हैं कि ये जो disorder है इसका नाम RSI है या तो फिर work related upper limb disorder है. ठीक है? और जितने भी केसेस की बात हम करते हैं ना, those are the reported ones. मतलब कि इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो कि रिपोर्टेड ही नहीं है. Okay. Like, you know, you have students, you have children who are not even included. There are people, you know, who struggle in silence. Correct. Right. So this paragraph is trying, this part of the paragraph is trying to emphasize that, see, almost everybody is suffering from this. ऐसा नहीं कि खाली if you're working on computer, yeah, if you're working, or there are people, you know, who are kind of suffering from this, but there are people who are not reporting due to various other reasons. Correct. ठीक है. उसके बाद अगर आप सेकंड वाले पार्ट में आओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट. इट सेज RSI इज नॉट अ डायग्नोसिस. ठीक है? मतलब RSI एक डिजीज नहीं है. से फॉर एग्जांपल कैंसर, वो एक डिजीज है. ठीक है? हमको पता है कैंसर होता है तो ट्यूमर फॉर्म होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट RSI इज अ कंडीशन. सी, इट सेज अम्ब्रेला टर्म फॉर अ रेंज. तो एक चीज में प्रॉब्लम नहीं है. इट इज अ रेंज ऑफ अबाउट 30 पेनफुल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स लिंक्ड टू डेली ओवर यूज ऑफ अ मसल. मतलब कोई भी बंदा या कोई भी बंदी या कोई भी इंसान जो डेली ऐसा कोई काम करता हो जो कि जिसमें यू नो डेली ओवर यूज ऑफ अ मसल होता है. रेगुलरली यू आर ओवर यूजिंग अ पर्टिकुलर मसल इज ऑलवेज एट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस. करेक्ट? जैसे इफ यू सी टेनिस एंड गोल्फर्स एल्बो, factory assembly workers, computer users, musicians, dressmakers, etc. Text messaging has not yet been known to cause the condition, but Virgin Mobile was concerned enough 2 years ago to advise users to flex their fingers and shake their wrists occasionally. So this is a condition. This is a fatal, I mean, this is a medical condition. It is not like कि, you know, RSI मतलब खाली उसी को होगा जो कंप्यूटर यूज करता है. ऐसी बात नहीं है. It is a condition जहाँ पे if you are overusing the muscle regularly, ओवर यूज कर रहे हो, एक ही काम बार बार कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो, तब जाके यू नो ये डिजीज आपको होता है. तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दे आर गिविंग एग्जांपल्स, राइट? फैक्ट्री असेंबली वर्कर्स, कंप्यूटर यूजर्स, म्यूजिशियंस, ड्रेस मेकर्स, इनको हो सकता है. एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली इज RSI. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि जितने भी रिपोर्टेड केसेस है वही दर्ज होते हैं, उसके अलावा जो केसेस है दोज आर नॉट इवन रिपोर्टेड. करेक्ट? गॉट इट? Is that clear? Got it. Yeah, it's clear. Now we move on to the list of headings and tell me which is the heading that should work. Again, when you're looking for the headings, we are not focusing on the individual words. Rather, we are focusing on the entire idea. You will only get confused. See, confusion होने के दो, if you're saying कि मैम मैं confused हो रहा हूँ, उसमें दो चीजें हो सकती है. एक तो आपको language समझ नहीं आ रहा है. You know, you're not being able to understand the crux, not being able to connect the ideas. You're understanding the language, but वो जो connection होता है ना एक idea के साथ दूसरे idea एक particular paragraph में, वो आपसे नहीं हो पा रहा है. एक तो वो हो सकता है. सेकेंड चीज और एक हो सकती है, कभी कभी जब हम हेडिंग्स पे आते हैं, when we are coming to the list of headings, you know, we tend to focus more on the words, individual words. But it's not like that. We have to focus on the entire idea. ये पूरी idea is important. This entire idea is important. Am I clear?
Yes, yes, ma'am. So tell me, which one should be the heading? Heading क्या होनी चाहिए? It is eighth one. Yes, how common is the problem? It is talking about, different people of different profession from different walks of life जिनको ये problem हो सकती है. Correct? चलो. So is there a confusion now? No, right? Yeah, correct. Yeah, second. Yes. So there wouldn't be a confusion if you are doing it in the right way. तरीका आना चाहिए. The approach has to be correct. Okay? All right. Work on paragraph C. Yeah. Is it done? Faisal, Yeah, it's done. Yeah, it's done, ma'am. tell me, what is the idea that you're getting from this paragraph C? All right. Yeah. It third one, an inaccurate comparison. Yeah, I'm talking about this. What is the idea Yeah, that you're getting from paragraph C? The it, idea. yeah, it's comparing, okay, the one which is suffering and the one with the marathon runners. Okay, the marathon runners, they not. I mean, they never go for running on a daily basis. For the next time, whenever they run, they get a gap. But whereas this RSI suffers, okay, they work on a daily basis, and how it's getting affected for them, is different from the one who runs on the marathon. So it's comparing Right. between the two. So if you The if you one see, is yeah, if you look at paragraph B, अगर आप paragraph B देखोगे, वहां पे बहुत clearly उन्होंने mention करा है that RSI is a medical condition that would happen if you are overusing a muscle on a daily basis. Correct? Paragraph C may correct. they are trying to draw a comparison or they are trying to draw a contrast between say for example somebody who is working on a computer on a regular basis like you and me, and then somebody who is a marathon runner. Now a marathon runner, I mean you and me who are working on computers, I'm giving sessions on computer, you're basically working as an IT professional, we have more chance to develop RSI. Why? Because we are doing it on a regular basis. हम लोग हर रोज कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं. Correct. But when it comes to the marathon runners, they are also overusing muscle and joints, no doubts about that. But then they have a break in between. एक जो मैराथन रनर है वो शायद महीने के हर रोज रन नहीं करता है, right? Maybe he is running for 4 days and then taking a break for 2 days. So that is where we understand that there is a comparison or there is a contrast, but the comparison is slightly inaccurate. Correct. Got it? And then you move on to the list of Yeah. headings. So यहाँ पे आके आप देखोगे that this should be the answer. Third one, C. तो कोई Third confusion हुआ अभी? नहीं हुआ? नहीं, slowly I'm getting it. Yes, exactly. So instead of,
कंफ्यूजन हो रहा है कैसे होगा, कोई और ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, ट्राई टू फोकस ऑन द टेक्निक दैट इज टॉट टू यू, बिकॉज दिस इज अ टेक्निक विच इज वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड वन. ठीक है, एंड इट विल हैपन ओवर टाइम. Do not think that this is language and something will happen overnight. दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली फॉर यू. लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लैंग्वेज समझ आती है. ठीक है, मैम प्रॉब्लम होता इज क्या विद है, द मैं कनेक्ट. आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. मैं आपको मेरा प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम विद द वो इतनी कनेक्शन. ज्यादा इंफॉर्मेशन, हाँ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि याद नहीं रहता कौन सा पॉइंट मिस हो गया, कौन सा पॉइंट वो हो गया. आपको तो याद करना प्रॉब्लम ही वहीं नहीं पे ना, हो रहा है. आपको याद नहीं करना है ना, आपको खाली कनेक्ट करना है. क्या मैंने आपको बोला है हाँ कि आप वो याद करो? नहीं नहीं बोला है नहीं ना, नहीं नहीं, वो आपको नहीं कनेक्ट है. करना है. यू हैव टू जस्ट कनेक्ट. एक जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ का हमेशा एक मुद्दा रहता है. कभी कभी एक पैराग्राफ में दो तीन जी मुद्दे हो सकते हैं. तो मुद्दा मतलब क्या है? जी मुद्दा जी. मतलब ये है कि दो तीन सेंटेंसेस या दो तीन आइडियाज मिलके एक मुद्दा, और दो तीन आइडियाज मिलके एक मुद्दा. करेक्ट. सो इवन इफ यू आर करेक्ट करेक्ट. अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, इवन इफ यू आर फॉलोइंग द लैंग्वेज, कनेक्टिंग इज इम्पोर्टेंट. कनेक्टिंग. ये जो हम्म. ये यहाँ पे जो ये आइडिया है ना, देखो आप इसको पकड़ लो, पैराग्राफ सी को आप पकड़ लो. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक it is talking about athletes, marathon runners, or yet is a contrasting linker, and then from here to here it is talking about the computer related RSI. Correct? करेक्ट So there is a करेक्ट. comparison. तो वो comparison हो रहा है, वो हमें समझना है ना. So there are two steps. एक, understanding the language. Second is understanding that, see, this is the comparison done. Got it? गॉट इट. Okay, work on paragraph D now.